Right now I'm reporting from Kairana because from today the polling have started in 58 assembly constituencies of 11 districts in UP, and you can see the visuals behind me where you can see the huge number of voters, the long queue of voters in polling center in Kairana. Not only male but female voters have also come up in huge numbers to cast their vote, and we are seeing these visuals from 7 a.m. since the voters in huge number are coming here. And not only this polling booth, there are many polling booths which are highly sensitive polling booth. And if we show you the visuals of this polling booth, you can see the heavy security have been deployed in polling booth. Even the CCTV cameras have also been installed here. The people who are coming, they are being checked if they are following proper COVID protocols or not. They should not carry their mobile phones inside polling center. And in this polling center, there are 4 polling booths and highly sensitive polling booths it is. And if you talk about entire Kairana, there are 111 polling booths which are highly sensitive and 99 polling booths which fall under the category of sensitive polling booth. The tough fight is seen between the alliance candidate Nahid Hassan and BJP candidate Mriganka Singh in Kairana. Not only this entire constituency is Muslim dominated, but we talk about the voters. 3,17,000 votes fall in this constituency, and among that 1,37,000 votes are of Muslim voters and 25,000 votes followed by Jat voters. And all the 4 polling booths where the visuals which we are showing you from Kairana polling booth, you can see whole huge number of voters who are in queue standing. The female and male queues are entirely different, and huge numbers of voters are coming up here. And where we are right now, from this polling booth, just 1 kilometer away is the residence of Nahid Hassan, who is in jail, but his sister Ikra Hassan has been campaigning for brother since the start, since they have filed their nomination. But a tough fight is seen between Mriganka and Nahid Hassan. And if you talk about the issues here, all the issues are prior. If you talk about the law and order, if you talk about the Palayan issue, which has been talked highly in this constituency, all the big faces either from BJP, either from alliance, have come here for the campaign. But we talk about this constituency, it is a hot seat, it is a highly Muslim dominated seat. If you talk about Shamli district, there are 3 assembly constituencies, and among them Kairana is the hot and highly Muslim dominated seat. That was the ground report that my colleague Harsha in fact filed over there from the town of Kairana, which was in fact hit in 2017 due to the mass Hindu exodus. That she's reporting from ground over there. Let me now also go back to Ghaziabad, from where my colleague Ayushman is standing by. Ayushman, you have been reporting from Ghaziabad and taking a look at the voter turnout for us. You've also happened to speak to a lot of voters. Earlier in the day, there were a lot of people who went ahead and complained about the bad roads in Ghaziabad, also spoke about the sanitation issue. Is this, or are these the major issues that the voters are in fact voting for this election, or there are more cropping up? Well, that remains an important point as to what people choose to vote upon, because there are largely issues being discussed which are very local in nature. They're talking about roads, they're talking about sewage. In fact, we are right now in Loni. It's a very close place from the national capital, and still you can see right from 7 a.m. we have seen people standing in lines, and these queues are only increasing. I have got a couple of people who have just voted. Sir, आप लोगों ने वोट कर लिया. क्या मुद्दे हैं जो कि दिमाग में आपके हैं गाजियाबाद को लेकर, जिनको लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि वो वोटिंग जरूर करें. ये अपना राइट्स है, हर किसी को वोट करना चाहिए. अब आते हैं आपके पॉइंट पे. तो ये गाजियाबाद में जो लोनी एरिया है, ये दिल्ली के सबसे पास का एरिया है. लेकिन यहाँ की जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो शुरू से ही है. मुझे करीब 8 साल हो गए, अभी तक ना कोई रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है, ना सीवरेज का डेवलपमेंट हुआ है. और आप ये देखिए, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये पिछले 10 साल से ऐसा ही है. यहाँ ना कोई बाउंड्री वॉल हुई है, ना इसका कोई डेवलपमेंट हुआ है, और ना ही ऐसा कुछ काम हुआ है जो आपको दिखेगा. मेनली होता क्या है, जैसे ही इलेक्शन आते हैं, जो भी पार्टी होती है, जो भी लोकल नेताज होते हैं, वो इलेक्शन के टाइम में ज़रूर यहाँ आते हैं. उसके बाद में 5 साल तक किसी को याद नहीं होता, कोई राउंड नहीं करता, ना कोई पूछता है रोड कैसी है. आप यहाँ अगर कभी बारिश के टाइम में आओगे तो आप बिल्कुल भी पैर नहीं रख सकते. छोटे छोटे बच्चे सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, इतना पानी, इतना गड्ढा है.
लेकिन मैम एक सवाल आपसे ये जानना चाहता था कि ये इश्यूज डिस्कस तो होते हैं, क्या ये इश्यूज पर आप लोग ये सोचकर वोट भी करते हैं? क्योंकि एक लार्जर इशू को क्रिएट किया जाता है, जैसे वुमेन सेफ्टी, अगर उस पर आपकी बात करें तो क्या ये दिमाग में रहता है कि ये डेवलपमेंट का इशू है, मुझे इस पे वोट करना है? हाँ, होता ही है, दिमाग में तो चलता है कि चलो कुछ अपन वोट कर रहे हैं तो रोड वगैरह, सीवर, बच्चों के लिए आने जाने में, हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं, दिक्कत होती है, आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कितना कुछ बदला है, मतलब अगर आप अभी कुछ नहीं बदला, 8 साल से मैं रह रही हूँ, अभी कुछ नहीं लग रहा है कि बदला है। मेरे घर से स्कूल तक आते हैं, कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सीवर का जगह जगह पानी हो रहा है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, स्कूल छोड़ने में, आने में। स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो बारिश के टाइम में तो चला नहीं सकते, निकल नहीं सकते घर से, तो ये डर मुद्दे- लगता है घर ये- से निकलने से पहले ही। जो विमेन इशू की बात की जा रही थी, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात भी इस बार की गई है, आपको क्या लगता है उस पर कि ये सिर्फ इन बातों का इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। वो मैंने एक्चुअली ये सब प्रोपोगेंडा होता है अपने अपने पार्टी का, कुछ ना कुछ ये जो भी संकल्प पत्र होता है इनका या जो भी होता है, अगर उसका ये 10% भी कर दे पार्टीज, तो ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं ये सिर्फ लोनी की नहीं, पूरे देश की प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जो सिर्फ 10% के लिए कह रहे हैं, हम 100% के लिए नहीं कह रहे। अगर 10% में भी ये सब कुछ हो जाएगा कि किसी भी आम पब्लिक को या परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होता ये है, कहते कुछ और है, उसका माइनस में भी नहीं करते ये लोग, कुछ भी नहीं करते, ना कुछ करना चाहते हैं। There quite a lot of dissatisfaction there. Definitely, there is something. This is something that has echoed through all those people whom we have spoken to, who are clearly saying that on ground the work like roads and sewage could have been done better in previous year. That is something which is definitely on minds when people are going to vote out there in Loni of Ghaziabad in first phase of UP elections. Absolutely, Ayushman. Thank you so much for bringing to us the voices of people. These are voices that matter because they are voting on development aspects and they are not really going ahead and, discussing things on that polarizing fault line that probably a party in power has discussed or a party has stayed away from. Development is all they want, and we'll continue to actually go ahead and stay on this particular story. This is our top focus here on Mirror Now.